Good evening, guys. Again, I'm back with the lectures. In last class, we have discussed the theory part of chapter 1, that is unit 1. And today I'll be solving some problems, practice problems related to the topics. So let's get started with the problems. Now, first problem is write a C program to calculate area of a rectangle. पहला प्रॉब्लम है राइट सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल बेसिकली ये शेप का होता है, इसका एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि आप लोग सब जानते होंगे। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी विल राइट द कोड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स गो टू वीएस कोड। चलते हैं। First of all, I will use boilerplate. Okay. Now we'll take value int a, int length I will take int breadth I will take area equal to L, that is length, into breadth. Now we will print area of angle is, we want to find this in integer, so we will write modulus of d and then area. Now area we have to write here int, we have to take variable. Okay. Now if we provide length equal to 1 second, 10, breadth equal to 20, so according to that the answer should be 200, right? Run the code. We're getting the answer is 200, right? Now here the question arises, यहाँ तो हम चलो ठीक है int length equal to 10 ले लिए, int breadth equal to 20 ले लिए, और एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिए, 200 आया, राइट? अगर क्या मतलब हमको अगर बोलेगा यूज़र लाइक वी हैव टू टेक इनपुट बाय आवर सेल्व्स, like suppose I want to take input, मतलब user want to take every time different inputs, so every time we don't have to write like length equal to 10 or breadth equal to 20. This is so tedious process. So we will go through another thing, that how with the help of scanf how we can take inputs from the user, right? So let's use the scanf function. Now instead of here, I will remove this one. One second. Into the length. This is slash n. This is for next line. It will the cursor goes to next line. So for that what will we use?
No, we will use scanner for taking the input from the user. Address of operator, I have already discussed about this in yesterday's class. So address of, we could say length. So the address, whatever the value, it will be goes to that address length. Mm, for breadth, same thing we have to write. Can we use scanner function? Again, we will use address of operator and then breadth. Now since area equal to length through breadth, so the area of the rectangle is modulus of d. So area. So let's see how the program goes. Now suppose if I write length equal to 5, right, 1 second, breadth equal to 20. Wait a second, here I did some mistake. No problem at all. Yeah. If I write length equal to 10 and breadth equal to 50, so it should be 500. Okay. Now again, if I write length equal to 60 and breadth equal to 20, then it will be 1200. So 1200 giving the result. Okay. Like that, it will work. Now another problem I'm going to solve. Let's rub this one. The another problem is problem number 2. Calculate the area of circle and modify the same program to calculate the volume of a cylinder given its radius and height. Now यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड मॉडिफाई द सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ये बोल रहा है कि पहले आप एरिया निकालिए सर्कल का, एक सर्कल का एरिया निकालिए, उसके बाद सेम प्रोग्राम को आप मॉडिफाई कीजिए और सिलेंडर का भी एरिया निकालिए। सिलेंडर से वैसा होता है, 2 सर्कल होता है उसका, और ये सरफेस एरिया, ये इसका पूरा वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, वॉल्यूम कितना ले सकता है। तो इसका सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू इज 3.14, आर मीन्स रेडियस, दिस वन इज रेडियस, एंड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। सो यही होता है। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड देन ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। और हम पहले देखेंगे, पहले डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके देखेंगे, उसके बाद फिर उसको हम
यूज़र के द्वारा इनपुट करेंगे वैल्यू, और फिर देखेंगे कि कितना कितना वैल्यू के अनुसार कितना रिजल्ट आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकंड प्रॉब्लम। देखते हैं, पहले हमको क्या निकालना है, कमेंट इसे लिखते हैं, यहाँ से कमेंट देते हैं। Write a program to calculate the area of circle. Write a program to calculate the area of circle and modify the program and so calculate the volume of a cylinder. Okay, now what we need for circle, we need radius. Okay, and pi, that value is 3.14 in fraction, so it will be in float. And another one we need for cylinder, we need height and radius plus pi 2. Okay, now let's calculate the area of circle. Now suppose if I will take everything in float. Okay, float radius I will take float pi equal to 3.14, that I will take constant, pi equal to 3.14. Now if I actually area float, I will float area equal to pi into r radius into radius. Okay, now if I wanted to print the area of circle is, wanna get this one in float, so I will write like this. Now area, now if I provide radius equal to 5, so what will be the area? Area is, the area of circle is 78.5. Now if I want that this much fraction should not come, this much value should not come after point, after decimal, so we will do something here. That is, suppose if I want, so he will write 0.1f, so after decimal it will, after number it will come only one. Okay, 78.5. After decimal point there is only one number, right? So like that, if I add 2 here, so it will go 78.50, right? Now this for the same case we can also calculate for like volume of cylinder भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं ठीक इसी तरह वैल्यू प्रोवाइड करके। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू लाइक रेडियस इक्वल टू 5, पाई इक्वल टू 3.14,
Now user wanted to insert, like, he wanted to put radius equal to something else and pi should be constant all the time. So how we can proceed with it? So let's go through that. यूज़र के द्वारा, इनपुट के द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हटाते हैं। स्कैन अप करेंगे, रीड करेंगे वैल्यू को, उससे रेडियस, लाइक कितना यूज़र लेना देना चाह रहा है वैल्यू। एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो रेडियस में चला जाएगा एड्रेस, जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ देखो हम कैसे लाते हैं इसको। नाउ हम रेडियस अगर लिखते हैं 10, देन द एरिया ऑफ सर्कल इज, 1 सेकेंड, okay, here I can write f because we are using float. So the area of circle is 314.00 because we have at 2.2 f after modulus, so that's why it's a recurring digit is only 2. Okay, now similarly we can also modify and find the volume of cylinder from this program only. So what we're gonna add here, we're gonna add height, right? Now we're gonna take printf, enter the height of the cylinder. Now we're gonna read the height of a cylinder by using modulus f, and then we will use address of operator, and then we will use height. Now we're gonna make one variable of height for HEIGST height. Okay. Now we want to find volume, so volume we'll use here, enter volume, so pi r squared into height we will include, and then we will get volume of cylinder like this. Now we will also include here volume of C. I will write cylinder, C. So okay. Now I'll save the program and then run. Now if I write radius 10, height is 10, then the volume of a cylinder is 3140. So this is all about today, guys. I think this much two programs is much needed for the whatever I have discussed earlier. So I think this two program will play a vital role for the better concepts. So thank you guys, thank you.